Namaskar, good morning. This is Suraj Singh from Faridabad, Bharat. Again, to disturb you, to have connection with you. Maybe some of you like, some may not like, but it's important to discuss with you. Today's issue is very important because related to Jammu and Kashmir and Constitution of India. Whatever development is happening is very, very important to understand. And Constitution of India is our soul, which must be again referred to. You cannot live without that. It's important, and every must know. And it's Bharat Sanvidhan again. You know it very well, but those who know for them it is Bharat Sanvidhan. In Hindi it is, and this is the preamble of this Bharat Sanvidhan. It's very, very important to be understood. And again, this is Bharat Sanvidhan, preambles, very important for all of them. What is happening in Jammu and Kashmir, we know all that. What government of India, Bharat Sarkar is doing, we know that, and World Community, we know that. Not happy situation anyhow. First of all, yesterday, 15th of August, the day of our independence. We got independence, everybody knows, in 1947, and this independence was very different from viewpoint of existing situation in Jammu and Kashmir and ours. Well, people celebrated very fine, but I didn't feel happy on this day this year because our government, Bharat Sarkar, arrested, clamped down whole public of Jammu and of Kashmir at least. They released Jammu later on, but whole public was clamped down. Around 1 crore people, 1 crore public, innocent people, kids, newborn babies, women, girls, seniors, veterans, and political leaders clamped down, which is not acceptable. You could treat different way, but imposing curfew everywhere for none of any fight, none of any dispute, none of any crime. As a citizen of this country, I don't accept this. You have no right to clamp such people in for 12 days. Okay, 1 day, 2 days, that's different. Something happened, mob happened, and you can say disputes happened between two groups. So you can say there was a clamp down. I agree with that. But continuation of that, even on Freedom Day, even on Eid Day, nobody accepts that. Of course, I am Bharatvasi and have pride with that. But if you do injustice to people, you do injustice to them, maybe Muslim or whoever, I don't accept that. There are terrorists, I agree. There are terrorists, but are they terrorists? Question is that. Are 1 crore people or 1.3 crore people, they terrorists? There could be terrorists there because everywhere they are. But what crime these people have caused? If there is a change on law, you have change of law. Parliament has changed the law. Government has changed the law. That is legal or illegal. That is something else. But why did you arrest these people for what? So I was not happy on this. I still am not happy because this is injustice caused to human being. They are all our family members. If I am Indian, I am Bharatvasi. We are 140 crores people. All are having one family according to understanding of Constitution of Bharat. When we say we people of India, we people of Bharat, we say that in preambles. We people of Bharat, we people of India, you may say, having solemnly resolved to constitute this country, Bharat India, into sovereign, secular, socialist, democratic, and republic, and to secure to all its citizens. We say that or no? We claim or no? We claim that. We claim that we want to deliver them justice of every kind. We want to deliver equality and liberty. And when we say that we want to create friendship and fraternity and brotherhood, where is that? Shall you keep your brotherhood? Shall you give a fraternity into jail for none of any? Okay, if they're murderers, they're criminals, they have looted something, you have every right to put them in jail. But why for this issue? What fault is theirs when you change law? You are changing law in your parliament. It's their parliament also. It's their country also. But why did you arrest them? Why did you leave them free? You would say they will start protesting. Yes, they will protest now also. How many days more you shall keep them? 1 month, 2 months, 1 year, 2 years, 5 years? How long? Under what law? I am asking everybody, every citizen of this country, government of this country, and apex court of this country. You are not doing your job, apex court. You did not dispose certain petition which was brought to you. You just throw out saying that it's not required. You are Supreme Court of my country.
It is your duty to abide by constitution and to protect people's right. They are also people. Jammu and Kashmir public is also our people. If we say that it is integrated part of this country, then why we did not support them? Why they are still in jail on 13th day? And how many days more Supreme Court you think that that is justification? And how many days government of India thinks is justification? Something you have done, why should they suffer? Shall people of India understand? You celebrate 15th August and they are in jail. You eat sweets and they are in jail. You are enjoying and they are in jail. EVMPM is talking 1.5 hours from Red Fort and they are in jail. I appreciate Sonia Gandhi. She did not go to Red Fort. I am not Congress person. I don't never support Congress now. But as in person, she did is right. You should have condemned. And even you should have condemned the speech of Prime Minister, because this Prime Minister is not publicly elected Prime Minister. This Prime Minister is EVM based elected, and by cheating he has become PM. So he is imposed PM, not elected member of Parliament's based PM. I refute it. He is not our Prime Minister, in fact. He is a spoiler of this country. He has done something which he should not have done. In name of development, you will do this? In name of development, and that is only pays development, imaginary development, you will act like that? As citizen of this country, you accept this, and there are people who are claiming for girls from the air, for land, you are interested in their land only. You are so avaricious, you are so greedy that you are waiting for their land, and you buy land. If you want to buy land in Kashmir, I ask you buy land in Himachal Pradesh. I ask you buy land in Mizoram. I ask you buy land in Arunachal Pradesh. I ask you buy land in Nagaland, which is now another country, virtually. Did you ever ask? Did their TV channels show that Nagaland has been separated from this country virtually? Only army is there and all other rights they have. They have separate passport, they have separate flag, they have separate constitution, and they have everything separate. Nobody raised question on that. Then you are claiming you are patriot. Why different treatment with them? If they can be liberated, why are you putting curfew on Kashmiri public? What's their fault? If something 72 years back signed some document, is it their fault? You are acting one-sidedly, one-handedly. You are acting on one end on your own. Do you know what law applies? Public know it or don't know it? Public don't know it, I'm sure. Our public don't know what is fact. You are only talking Article 370 of the Constitution of India. You are only confined to that. Why don't you confine to instrument of accession? How many people of you know, and how many people of you know about 370 itself? How many of you have gone through that contents of Article 370? I am sure even government people have not gone through that. Public shall never go. I talked to many people yesterday, even to my close. They didn't know what is. I asked them what is meaning of 370. People don't know what is meaning of it. They just say it is gone, and Kashmir is with us. This is practical problem here. We don't know anything, and we are claiming we know it. It's good, very good, and we welcome it. How many of you know that 370 is linked to what? 370 is linked to instrument of accession. You should know it now if you don't know. What is development? You arrest people, 1.3 people. OIC has decided now. You know what is OIC? Islamic countries, Organization of Islamic Nations, Islamic countries. They have now decided against you. Release these people, talk about them, have discussions, accept their demands, whatever they are. They have taken decision. This OIC, OIC, all Islamic countries involved. There's OIC, UNSC, United Nations Security Council. Today meeting have to convene schedule. They are going to conduct indoor meeting. Of course, Pakistan's application is there, but Pakistan cannot sit there. Russia has supported, China has supported. What development is going? What you have caused? What you have achieved? You are only celebrating that Article 370 has gone, and we are very happy. You are dancing. You are dancing because you want to buy land there. You are dancing because you want to kidnap girls from there. This is what you want. Shame on you, all people of this country. You are not human beings. Your intention is bad. What do you think? You have done very, very big thing. What you have done? You have spoiled image of this country. Bharat, a country that was always respected,
Since pre-independence, they were respected. Now you have lost your respect. You can arrest people, arrest public, arrest civilians. You have that capacity to arrest civilians. It's not 100 civilians, 200 civilians, it's 1.3 crore civilians you arrested, from kids to senior most veterans. They are in jail, virtual jail. It's because of you, because of this even PM, because of Supreme Court, because of government of Bharat. It's because of public of Bharat. You are not public. Really, I'm telling you, you are not public. You are blind mind public. You cannot see, you cannot understand, you cannot decide anything. You can only jump. Oh, Modi has done it. Modi has done it. That's all foolish people of this country. Openly, I'm saying, you don't respect human beings. They are Muslims. You are happy. If they are being, if they would be Hindu, you will not say anything. Had they been Hindu, no, you would say anything because they are Muslims. You are happy. What is difference in Muslim and Hindu? Tell me. Both are same. Why do you think of that way? You are spoiling image of this country. Modi spoils image of this country. He thinks he is God. Let him think whatever he thinks. He is, in fact, he is not even a human being. Only an animal can do this. Hitler was an animal. Netanyahu is an animal. A living animal he is. Netanyahu, Prime Minister of Israel. He acts in the same way as Modi is acting because Modi is learning from him. That's the problem. You are not statesman, Modi. You are not statesman. You are Hitler. You are Netanyahu. Netanyahu, who doesn't even leave kids. He arrests kids. He arrests senior people. He arrests handicapped. He puts women in jail. He doesn't allow them food. He doesn't allow houses. He arrests lands and makes houses, settlements. Same thing you are doing. Without understanding, or even if you understood documentation of Kashmir and Jammu and Kashmir, you should not have done this, but you have done it. How many people of you know instrument of accession? How many people of you know real 370? How many people of you know about CO48? What is CO48 and what is CO47? So there's 47 documents, 47 ordinances signed by President passed up to 1954 when CO48 was created, and 260 out of 395 articles were already applied to state of J&K. Do you know that? All union list was applied. Instrument accession was expanded for purpose of application of union list and concurrent list and state list. Do you know that? There are 395 articles and 2/3 already applied. What was left? 1/3 of that, and by passage of time this could also be covered. Why? What hurry was there? Why you were in hurry? Congress oiled these people, massaged these people, and gradually brought them to complete constitution of this country, except 1/3 court part. Even Supreme Court was applied. Before it was not there. Now Supreme Court is jurisdiction of J&K. What do you want then? What did you want? You wanted something which you did not understand. Go through complete details. On day when complete constitution was supposed to be imposed on on J&K, automatically 370 would have gone. Automatically instrument of accession would have gone. Automatically union reservation would have gone. Union reservation is now still there. Automatically Shimla agreement would have gone. Why don't you understand sequences? Because you don't want to understand. You just want to jump, celebrate. Even illiterate and literate both are celebrating because they don't understand anything. What is value of your education if you cannot understand documentation? If Prime Minister cannot understand documentation, if Home Minister cannot understand documentation, if Governor cannot understand documentation, if President cannot understand documentation, and if Supreme Court does not respect documentation, anything, what is that? That is, all institutions have been grabbed by PM. No institution exists independent now. No institution. All have been captured by Prime Minister like J&K, and this shall not work forever. Remember, nothing is permanent in this world. Nothing is permanent, and Modi is also not permanent. Things will move, and you will suffer. We will suffer, not Modi. There is expectation of imposition of war now if you don't resolve this problem.
There will be sanctions on us. Pakistan will have war on us. Certainly, because now it's open. Pakistan is open. She is open now. Pakistan as nation is open. In past, they were not open. They were sending terrorists. They were doing everything against us, but now they are open. See what these people are. What Indians are doing. They are saying this. They are killing human rights. They are killing people. They are shooting them. Now everything has been exposed. We were like God before. Now we are gradually getting into status of a devil. OIC against us, and probably you and SC would just say two things only. One is civil agreement, and if you don't abide by that, which is our responsibility. Remember, civil agreement, we are first party, and Pakistan is second party. So first party is always responsible. Just remember that. First party is responsible. UN resolution. If you don't accept that, UN resolution will come to you. And you also say, you know what? What does it say? It says, conduct referendum. If referendum is ordered, what you do? How shall you escape? You cannot say anymore, this is international, this is not international problem, this is internal. Now, UN resolution is external. Similar agreement is external. Instrument of accession is external. And Article 370 is half external, half internal. Yes, CO48 is internal, I agree. Fully, absolutely internal. 370 is half and half. Because if you read 370, you will find description at two locations. Instrument of accession. Instrument accession is international. Because two signs are there on that. One is King of J&K and another is Governor General Lord Mountbatten. So there are two heads of state, because at that time Lord Mountbatten was head of this state as Governor General, means he was in place of President now. So one is Bharat India state and another J&K Kingdom. So these two are different nations. So that is also international document. You should apply your mind, you should analyze, conduct study and then jump. Because when you jump without study, you will come down. You will not have any air. So problem is for us all. We are unable to understand facts of life. So we have ourselves unnecessarily put into a doldrum problem, a problem which cannot be solved. We have ourselves been, means we wanted to capture Pakistan into our control, but it has been reversed now. You have extended energy, you have provided energy to Pakistan, Imran Khan, and he is jumping now. At every location he is jumping, every corner he is jumping. Yes, people would say conduct similar talks under similar agreement. Who will do that? He has already invited you. You don't accept that. It's your fault, not Imran Khan's fault. Now there is no excuse of saying stop terrorism. You cannot say what for. You are already you are also a kind of terrorist. You have held 1 crore people into your custody. This is a kind of kidnapping or not? If they are criminals, I agree, you have every right. But all 1 crore people are criminals? Understood? No. So, what was ambition, what was milestone and target and destiny to achieve by conducting this exercise? You think by conducting this exercise you will gain something? No, you cannot gain anything. You will intensify their mental fire. You will intensify their internal, you can say, aspiration to talk of further, you can say, separation, further recognition of independent nation. They will go to that direction more and more, because they are not going to accept your constitution. This is clearly said, as indicated, as authorized, as written on instrument of accession. Have you gone through that document? You have neither understood what is 370, nor you have understood what is article of, you can say, what is instrument of accession. I'll just speak instrument of accession just for your reference, what language is there, so that you people can understand a little if you want to understand. And if you think this person is barking, he is like barking by the animal, you can say that, no problem. My duty is to my brothers in this country, brothers and sisters, just to understand what is fact of life. There may be certain people who agree with me, and there will be majority of persons who will not agree with me. I don't care for that. My duty as an individual is just to tell others what is right, what is wrong. Decision is yours.
It's not mine. I have no authority to decide. But my duty is only as a citizen of this country to check what is right, what is wrong, because I'm not a politician, but I'm an individual person, and I have a right to understand and to other people make them understand. So I just try my point of view to discuss with you. Acceptance or rejection is in your hands, not in my hands. My duty I am doing as a citizen of this country, because God has given me certain energy. I want to use it for country, not for my personal pleasure. So what this constitution, that is like a constitution, you can say charter, you can say it's a kind of charter that was agreed between our government and government of JNK. This charter is there, which says instrument of accession of Jammu and Kashmir. I already spoke this last time many times back, but again I am speaking for your convenience because it's very difficult to find it on Facebook. Instrument of accession of Jammu and Kashmir, and content starts like this. Whereas Indian Independence Act 1947 provides that as from 15th day of August 1947, there shall be a setup there shall be a setup as independent dominion known as India, and that Government of India Act 1935 shall, with such omission, additions, adaptations and modifications as Governor General may by order specify, be applicable to Dominion of India. And whereas Government of India Act 1935, as so adopted by Governor General, provides that an Indian state may accede to Dominion of India by an instrument of accession executed by ruler thereof. And therefore, now story starts. Now post charter starts. This was background till now. I, Shriman, Indra, Mahendra, Raja, Rajeshwar. See, I, Shriman, Indra, Mahendra, Raj, Rajeshwar, Maharaja, Dhiraj, Shri Hari Singh Ji, ruler of Jammu and Kashmir, in exercise of my sovereignty in and over my said state, do hereby execute this my instrument of accession, and now is the declaration. I hereby declare that I accede to Dominion of India with intent that Governor General of India, Dominion Legislature, Federal Court, and any other Dominion authority established for purposes of Dominion shall, by virtue of this my instrument of accession, but subject always to terms therefor, and for purpose only of Dominion exercised in relation to state of Jammu and Kashmir, hereinafter referred to as this state, such functions may be vested in them by or under Government of India Act 1935 as in force in Dominion of India on 15th day of August 1947, which act as so is in force and is hereafter referred to as Act. Number two, I hereby assume obligation of ensuring that due effect is given to provision of Act within this state as they are applicable therein by virtue of this my instrument of accession. I accept matters specified in schedules here to as matters with respect to which Dominion legislature may make laws for this state. I hereby declare that I accede to Dominion of India on assurance that if an agreement is made between Governor General and ruler of this state, whereby any functions in relations to administration in this state of any law of Dominion legislature shall be exercised by ruler of this state, then any such agreement shall be deemed to form part of this instrument and shall be construed and have effect accordingly. Terms of this my instrument of accession
shall not be varied by any amendment of Act or of Indian Independence Act 1947 unless such amendments is accepted by me by an instrument supplementary to this instrument. Nothing in this instrument shall empower Dominion legislature in to make any law for this state authorizing compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should Dominion for purpose of Dominion law which applies in this state deem it necessary to acquire any land, I will, at their request, acquire land at their expense, or if land belongs to me, transfer it to them on such terms as may be agreed or in default of agreement determined by an arbitrator to be appointed by Chief Justice of India. Nothing in this instrument shall be deemed to be a commitment in any way as to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangement with government of India under any such future constitution. Nothing in this instrument affects continuance of my sovereignty in and over this state or save as provided by or under this instrument exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as ruler of this state or validity of any law at present in force in this state. I hereby declare that I execute this instrument on behalf of this state and that any reference in this instrument to me or to ruler of this state is to be construed as including a reference to my heirs and successors. Even under this my hand, this 26th day of October 1947, and signed by Hari Singh, Maharaja Dhiraj of Jammu and Kashmir. After that, I do hereby accept this instrument of accession dated this 27th day of October 1947, and this is signed by Mountbatten of Burma, Governor General of India, and 27th October 1947. And after that, there are schedules adduced, and these schedules are like defense forces, regarding external affairs, regarding communications, and regarding ancillary. I am not going to in details of that because that is not necessary to be explained. So what I wanted to explain is this. If you have understood, it's fine. If you not understood, I explain it हिंदी. ये इंस्ट्रूमेंट जो साइन किया गया, जो बनाया गया, ये बनाया गया राजा धीराज ने जम्मू कश्मीर के, जो उस समय महाराजा थे वहाँ के, जिसका नाम था हरि सिंह, वहाँ के महाराजा, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को लिखा, साइन किया 1947 में, इस फॉलोअप किया। 1947 में जो आज़ादी का हमको साइन मिला था ब्रिटिश से, उसके बिहाफ पे, उसकी कंटिन्यूएशन में, और जो भारत सरकार का नियम था 1935 का, उस साइन जो लागू था हमारे देश पर, जो कि संविधान नहीं था, तो 1935 का भारत सरकार का कानून जो ब्रिटिश से पास हुआ था, उसके बेस पे कम्युनिकेशन में उसने रेफरेंस दिया। और उसके बाद कहा गया कि क्योंकि उसके अंदर 1947 की आज़ादी होने के, भारत स्वतंत्रता आज़ादी के कानून में लिखा था कि आपको एक डोमिनियन में जाना होगा, इसलिए हम भारत के डोमिनियन में आ रहे हैं इसके हिसाब से। तो उसने कहा मैं ये जो भी साइन कर रहा हूँ उसकी कंडीशन ये है कि मैं जम्मू कश्मीर का राजा होने के नाते अपने आप को इन कंडीशंस पे सबमिट कर रहा हूँ कि मैं आपके देश को ज्वाइन कर रहा हूँ इस कंडीशंस पे, और वो कंडीशन स्केड्यूल्स में दिए मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद वो कहता है आपका मैं ज़मीन आपको ज़रूरत होगी तो दूंगा, आप बताएंगे कहाँ चाहिए मैं दूंगा, या मेरी ज़मीन होगी तो मैं दूंगा। और वो कहता है ये संविधान जो है किसी भी कीमत पे चेंज नहीं किया जा सकता है मेरी मर्जी के बिना। जो भी मैंने इंस्ट्रूमेंट साइन किया है, या आप मुझसे बात करके इसमें कुछ ऐड कराएंगे या इसमें से निकलवाएंगे तो भी बात करके होगा, और उसके साथ जैसे ये इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाया है उसका एक सप्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा, वो भी इसका साथ आएगा। या भविष्य में हम जो भी आपस में बैठ के भारत और हम लोग स्टेट ऑफ JNK के जो भी है, हम जो भी बात करेंगे भाई क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है, हमको कौन सी अथॉरिटी मिलनी है नहीं मिलनी है, उसका भी हम इसी तरह से इसी का हिस्सा बनाएंगे और एग्री करके बात करेंगे। हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे तो अपनी मर्जी से मानेंगे, आप हमको कोई दबाव नहीं डाल सकते कि आप उसको मानिए।
आपको जो भी मनवाना होगा हमसे बात करेंगे बैठ के, हमें अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेंगे। आपके देश में जो भी कानून पास होंगे हमारे यहाँ लागू नहीं होंगे, अगर लागू होंगे तो हमारी अप्रूवल के बाद, हमारी मान्यता के बाद लागू होंगे। हम आपके देश में आ रहे हैं लेकिन हम अपनी प्रभु सत्ता को छोड़ नहीं रहे हैं। जिस तरह से आप प्रभु सत्ता संबंध माने जाएंगे भविष्य में, सोवरन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हम भी उसी प्रकार से मानेंगे। हम उस अधिकार को आपको दे नहीं रहे हैं कि हम प्रभु सत्ता संबंध नहीं है। ये बातें उसमें कही गई हैं और ये जो हम साइन कर रहे हैं हमारे जितने आने वाली पीढ़ियां हैं, जो भी होंगे हमारे बाद होंगे, उन पर लागू होगा। और ये हम आपको दे रहे हैं कि आप इसका एक अक्षर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करके उन्होंने दिया था और उसके बाद स्केड्यूल लगाया, उसमें लिखा है कि कौन कौन से एंट्रीज पर, कौन कौन से पावर्स पे आप कानून बना सकते हैं और बाकी भी हम बनाएंगे। और उसके बाद भी याद रख लीजिए, उसके बाद जो मैं CO48 की बात कर रहा हूँ, CO48 में 47 बार राष्ट्रपति पर साइन किए गए, राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस निकाले गए थे कि ये विषय जैसे हमारे एंट्रीज में है, हमारे देश की जो यूनियन लिस्ट है और जो हमारी स्टेट लिस्ट है और कॉन्फ्रेंस लिस्ट है, उसमें से पॉइंट्स निकाल के बाकायदा उनसे एग्री कराया गया था कि ये बातें आप पे लागू होती है नहीं होती है। वो मानता रहा कि हम इस बात को अपने डालते हैं इसके ऊपर, और उसके ऑर्डिनेंस निकलते रहे। और 48वां ऑर्डिनेंस लास्ट का था जो 1954 में हुआ था। 260 नियम 395 से, जो 395 हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं, उसमें से 265 आर्टिकल ऑलरेडी वो मान चुका था। बाकी रहा क्या था, 100 कुछ आर्टिकल जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसको मनवा सकते थे। इसमें कोई ऐसी आसमान गिरने वाली बात नहीं थी कि ऐसा था कि एक होता है आदमी जो सोच समझ के शांति से किसी को मनाता है, और एक आदमी होता है कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, मेरी बात को मान लो। बस फर्क इतना है। आप सिर फोड़ के काम करना चाहते हैं, एक आदमी शांति से प्यार से बैठ के आपको समझा के अपने आहिस्ता आहिस्ता काम चलाना चाहता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करना चाहता है, वो आफत में नहीं करना चाहता है। लेकिन जो आदमी सर फोड़ के किसी को मार देना चाहता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ। Whatever is happening is now we are in certain, you can say, very bad situation nationally and internationally. On one side we are liberating Nagaland, we are empowering them, we are giving them their passport power, we are giving them their UN representative power. This means they will join you, no, simply. Nagaland was integrated basically by, I think, Indira Gandhi, I remember. Indira Gandhi brought into us many, like Goa she brought, I think many other small areas she brought. And this gentleman, this Indian Prime Minister, is doing everything reverse what she did, unfortunately. And maybe one day he says, okay, Bangladesh is not for us and we allow Pakistan to join East Pakistan. Maybe he can go to any extent. This man, here is something else and here is something else. What he said in last 15th August, last 15th August 2018 from Red Fort, he said that we don't want to use bullets to Kashmiri people, we want to embrace them. So definition embrace is here in Jammu and Kashmir. Capture them, and this is embrace. Who can accept this? You. I think this is Modi's definition, or this is BJP's definition, or this is RSS definition. If you want to embrace someone, you don't use bullet. You embrace them, capture their state, capture their city, and then don't allow them to come out. And this is called embrace of RSS definition, BJP definition. Maybe you agree with that because you are supporter of Modi. You agree. I don't care for that. I'm just trying to tell you facts. What are facts? This is instrument accession. यही है इंस्ट्रूमेंट जिसके वजह से आया है। और आप कहते हैं कि हमने 370 निकाल दिया, बधाई हो आपको सबको, आपने 370 निकाल दिया। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि 370 में है क्या। कभी आपने पढ़ा खोल के? नहीं पढ़ा ना आपने, आप पढ़ना भी नहीं चाहते क्योंकि आप दस्तावेज नहीं देखना चाहते, आप खाली शोर मचाना चाहते हैं। रिक्शा वाले की तरह, तांगे वाले की तरह, मिनी बस वाले की तरह, आ जाओ हम आपको वहां लेके जाएंगे। आप सिर्फ पानी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पकौड़े बेचने वाले, आ जाओ 4 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए सब्जी बेचने वालों की तरह बात कर रहे हैं। चाहे आपका प्राइम मिनिस्टर हो या आप हो कोई है। आप इन डेप्थ में स्टडी नहीं करते, बात को समझते नहीं है, एनालाइज नहीं करते, बात को सोचते नहीं है, इसके प्लस क्या है, इसके माइनस है, कौन सा नियम लागू होता है, कौन सा नहीं होता है, हमारी शक्ति क्या है, हम क्या काम कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ये सब सोचना आपकी किताब में नहीं है। ये वही सोच सकता है जो पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी ये सब नहीं सोच सकता है। तो आपने अपने एक्ट से ये जस्टिफाई कर दिया, सबूत दे दिया कि पूरी की पूरी सरकार अनपढ़ों की सरकार है और आपके भक्त सारे अनपढ़ हैं, कि आपको कुछ भी कहा जाए उसको मान लेते हैं। आपने ना उसका सबूत मांगना है, ना उसको चेक करना है, ना कुछ नहीं करना है। चाहे भगवान से कहते हैं बस जो भगवान करेगा, अपने मैं नहीं कुछ करता, भगवान अपने आप कर देगा। आज हालत वही है। आपने ऐसा कांड कर दिया जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने वो बिल पास किए पार्लियामेंट जो आपके अथॉरिटी में नहीं थे, और जिनके अथॉरिटी में तो वो है नहीं, फिर आपने कैसे कर दिए पास। जम्मू कश्मीर की या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने या वहाँ की असेंबली माने, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं,
और उनकी असेंबली को आपने डिसॉल्व कर रखा है। तो एक गवर्नर कैसे असेंबली बन जाएगा, या आपकी पार्लियामेंट कैसे असेंबली बन जाएगी? नियम ये कहता है चार्टर के हिसाब से कि जो भी पार्लियामेंट पास करेगी वो मान्य नहीं है, मान्य वो है जो असेंबली पास करेगी। तो अभी तक जो आपने किया है वो सब गलत किया है, आपको समझना होगा, अच्छी तरह समझ लीजिए। आज की तारीख में आपके पास दो कंसिडरेशन है, दो बातें सोचनी होंगी आपको। एक बात तो ये जो 370 आया है संविधान में, वो कोई खोमचे वाला नहीं लाया है उसको, वो कोई पकौड़े वाला नहीं लाया है, वो कोई चाय बेचने वाला नहीं लाया है उसमें, वो कोई शोर मचाते वाला ककड़ी ले लो, मुझसे सब्जी ले लो, मुझसे आलू ले लो, बैंगन ले लो, वो झल्ली वाला नहीं लाया है। उसके अंदर वो जो लाया है ना, ये देश का संविधान के अंदर हमारी भारत की वो सरकार लाई है जो उस टाइम राज करती थी, और जो बैरिस्टरों की सरकार थी, पढ़े लिखों की सरकार थी। और वो इसलिए आया था कि हमारे पास उनका रिटर्न ऑर्डर था, जिसको कहते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन उसके अंदर लिखा है संविधान के 370 धारा में, धारा नहीं अनुच्छेद में। उसको पढ़ के देख लीजिए, पहले आप अपना दिमाग में डाल लीजिए, अपने दिमाग की जो अंधेरे वाली बत्ती है ना, उसको चला लीजिए, ट्यूबलाइट मत बनिए। एलईडी का जमाना है और दूसरे जमाने हैं। थोड़ा एटम भी अपने दिमाग में रखिए, एटम बम से सोचिए। क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं सोच सकते आप। उसमें साफ साफ लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन जो साइन हुआ उसकी वजह से आर्टिकल बनाया जा रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन वहाँ साइन हो रहा है, दो जगह उसमें लिखा है, और उसी की वजह से CO 48 साइन हुआ, जिसमें 47 बार ऑर्डर हुए थे कि हम ये ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात को, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, इसको नहीं मान रहे हैं, वो सारा उसमें लिखा। आपके इस सरकार ने क्या किया, 370 कह रहे हैं हमने हटा दिया, हमने CO 48 भी हटा दिया। बहुत अच्छी बात है, आप तो सब कुछ हटा सकते हैं भाई, आप पावर में हैं, और आपके भक्त नाच सकते हैं। बस कश्मीर हमारा हो गया। कैसे हो गया भाई आपका कश्मीर, जरा बताएंगे मुझे? आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका हो गया? आपने CO 48 हटा दिया, इसका मतलब 47 ऑर्डिनेंस जो साइन हुए थे राष्ट्रपति के उस समय में, ये वाले आर्टिकल यहाँ लागू होंगे, आपने उनको हटा दिया। और ये हमारा होम मिनिस्टर, जिसका बिल्कुल दिमाग में घुसा भरा है, वो कहता है जी हम इसके ऊपर दूसरा आर्टिकल ले आए हैं कि ये संविधान सारा लागू हुआ इस पे। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, आपने सारा संविधान जम्मू कश्मीर पे लागू कर दिया। बहुत अच्छा काम किया आपने। ये काम तो कोई सोच भी नहीं सकता था, जवाहरलाल भी नहीं सोच सकता था, पटेल भी नहीं सोच सकता था, माउंटबेटन भी नहीं, कोई नहीं सोच सकता था, सारे सारे बेवकूफ थे। एक अमित शाह ही इंटेलिजेंट है, जो सकता है उससे बड़ा इंटेलिजेंट मोदी है। ये दोनों बहुत ब्रिलियंट हैं, सब कुछ जानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं, सब कुछ है, प्रोफेसर है बड़े बड़े, ये सब जानते हैं, इनको कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री की जरूरत नहीं है। आपने 370 की टांग तो ही सर फोड़ दिया, आपने गया 370 आपके हाथ से। इसका मतलब ये भी होता है कि आपके हाथ से इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन चला गया। क्या नहीं होता मतलब ये? इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन में बातें क्या लिखी हैं, हम आपके संविधान को नहीं मानते, आपको कुछ चेंज करना तो हमसे पूछना होगा, ये चीजें आपकी, बाकी चीजें हमारी हैं। अगर आप वो कहते हैं वो चला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, तो इससे क्या साबित होता है? इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जरा बताएंगे आप मुझे? ये इंस्ट्रूमेंट जो मुझे हरी सिंह ने साइन करके दिया था, जिसको मेरे माउंटबेटन ने साइन किया, वो चला गया आपके हाथ से, वो खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपने इसमें 70 हटा दिया, आपने सब हटा दिया आपने। उसके जाने का मतलब ये है कि जो चीज उसके साथ आई थी वो चीज भी चली गई। वो क्या आई थी उसके साथ? उसके साथ आई थी JNK की राज्य आया था, JNK का किंगडम आया था आपके साथ। वो किंगडम आपके साथ आया था, वो कागज लेके आया था, उस कागज में सब परोसा था आपको, लीजिए साहब मेरी स्टेट को आप ले लीजिए और मुझे संभालिए, ये कहा था ना उसने। आपने स्टेट तो उससे ले ली, अब आपने उसको फाड़ के फेंक दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन को। तो अब क्या मतलब है? वो स्टेट अब कह रही है भाई देखो आपने मेरा सर्टिफिकेट फाड़ दिया, मेरी आइडेंटिटी खत्म कर दी, अब मैं वापस जा रही हूँ जहाँ से मैं आई थी। ये मतलब हो गया ना उसका। अब दूसरी बात ले लीजिए इसकी, दूसरी तरफ क्या है? अगर आप कहते हैं नहीं जी अभी भी वैलिड है, वो बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो आपको, फिर वो वैलिड है। आप कह रहे थे वैलिड नहीं है, अब वो वैलिड हो गया। अगर वो वैलिड हो गया तो वो ये कहता है कि मैं आपके संविधान को नहीं मानता, आप इसमें से हाथ नहीं रख सकते, बिना मेरे पूछे कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई शक्ति देश की कुछ नहीं कर सकती, ये कहता है वो। तब वो आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने पार्लियामेंट में क्या ड्रामा किया, उसका क्या मीनिंग है? आपने जो ये कहा जी हम ये CO 48 हटाते हैं, उसका क्या मीनिंग है? आपने जो उसको यूनियन टेरिटरी बन गई, उसका क्या मीनिंग है? वो सब बातें इनवैलिड हैं उसके हिसाब से। तो अब आप क्या चीज मानते हैं? आप मानते हैं इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन है या मानते हैं नहीं है? आप पहले खुद डिसाइड कर लीजिए। आपने बड़ा शोर मचा दिया पार्लियामेंट, हमने देखो मिला दिया। अरे कहाँ मिला दिया आपने? कश्मीर तो पहले ही मिला हुआ था आपके साथ, आपने क्या कर दिया उसमें? कश्मीर तो ऑलरेडी 70 साल से आपके साथ था, तो भागा कब है? वो तो कह रहा था मैं आजाद करो, इसका मतलब आपके साथ था ना वो।
आपको ये बातें नहीं समझ आती। वो कह रहे थे 70 साल से हमें आज़ादी चाहिए, इसका मतलब यही था ना कि वो हमारे साथ थे। तो आपने उनका इंस्ट्रूमेंट धक्का मारा, भाग गया से, भैया और नीचे तो भाग गए। आप भागने भी नहीं दे रहे उनको, आप उनको रख भी नहीं पा रहे। आपने कहा ना ये करता ना वो करना, पकड़ लो उनको, गिरफ्तार कर लो। अरे ये कौन सा सोल्यूशन है? कब तक गिरफ्तार कर रखेंगे आप? एक लिमिट होती है हर चीज की, हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, कब तक करेंगे? कब तक नहीं छोड़ेंगे आप उनको? सिर्फ सर पे डंडा मारेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी से छोड़ेंगे? आपको इतना डंडा मारेगी वो कि आपकी नानी याद आ जाएगी कि क्या होता है सब। आप क्या समझ के बैठे हैं? यूएनओ एक्शन नहीं ले सकती क्या? पाकिस्तान एक्शन नहीं ले सकता क्या? चाइना एक्शन नहीं ले सकता क्या? पब्लिक एक्शन लेगी वहां का, बाकी को छोड़ो आप। आपको किसने दिमाग दिया पागलों वाला? आपके भगत पागल, अब सरकार तो है ही पागलों की। जिस सरकार में, जिस लोकसभा में 233 क्रिमिनल बैठे हो ना, तो वहां ऐसे ही काम होते हैं। और एक हमारे साहब एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट साहब, वो खाली देख रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, अरे अरे बच्चा सीना है, अरे क्या डायलॉग है भाई देखो, अरे क्या गाना है, मान गई यार, ऐसा गाना तो बहुत बढ़िया गाना लिखा, वाह वाह वाह। यार आप जज हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब हैं आप, आपके पास संविधान है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है कि आप पहले जो संविधान में लिखा है उसके कर्तव्य की ड्यूटीज को पढ़ लेते तो अच्छा होता। 51 नहीं, शायद आपने भी नहीं पढ़ी। आपने इस देश के संविधान को संभालना था। अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना आपने, आपने आइडियल्स को माना। आप तो मरने दे रहे हैं आदमियों को, मारो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। एक रात में कुछ नहीं हो सकता, एक रात में गिरफ्तारी हो सकती है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, वो हो सकता है, उनको छुड़ाया नहीं जा सकता। आपने 1 करोड़ आदमियों के अधिकारों को हनन किया है सुप्रीम कोर्ट साहब। आपकी ड्यूटी थी उनको बचाना, उनके अधिकारों को वापस देना, संभालना, गवर्नमेंट को ऑर्डर देना, खतरनाक गवर्नमेंट को डंडा मारना। आपने गवर्नमेंट बचा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। कैसा हो गया सुप्रीम कोर्ट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट को संविधान में नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट। मैं भी जानता हूँ इतना संविधान, संविधान तो देश की रक्षा करने वाला है, हकों की रक्षा करने वाला है, पब्लिक की सेवा करने वाला है। आप तो उस सरकार की सेवा करें जो ईवीएम की सरकार है, जो पब्लिक की चुनी भी नहीं है, और आप तो ईवीएम के भी साथ हैं। आप तो इनके खिलाफ बोलते नहीं है, शायद इसलिए कि आपको भी धमकी दी गई है, ए चुप रहना, बोलना नहीं। शायद आप भी उस धमकी में आ गए क्योंकि आप भी जस्टिस लोया वाला भविष्य नहीं चाहते, यही कारण है। हम जानते हैं आप पैसे नहीं लेंगे, हम जानते हैं अच्छी तरह से आप ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन जस्टिस लोया हर कोई नहीं बन सकता, यही बात है। खैर हमें क्या लेना आपसे, आपकी मर्जी, कुछ भी कीजिए, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी सिल्वर लाइन देंगे ना, किसी आप सरकार का समर्थन करें ना करें, पब्लिक अपने आप संभाल लेगी। पब्लिक कोर्ट से ऊपर होती है। भारत का संविधान भारत की पब्लिक ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ना सरकार ने, किसी ने नहीं बनाया। भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया, we people of India having solemnly resolved to constitute our country into sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure our people justice, liberty and equality, etc etc। क्या सिक्योर किया जी किसी ने? ना तो सरकार ने सिक्योर किया उनके हालात को, कश्मीर के हालात को, ना सिक्योर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ना सिक्योर किया पार्लियामेंट ने, ना सिक्योर किया किसी और इंस्टीट्यूशन ने। नागालैंड को सिक्योर कर दिया, नागालैंड को तो सिक्योर कर दिया आपने, पब्लिक को पता भी नहीं है, समाचार में भी नहीं है, लेकिन आपने झंडा दे दिया उनको, आपने संविधान दे दिया उनको, अपना आपने उनको दे दिया, अपना पासपोर्ट दे दिया, आपने सब कुछ उनको दे दिया, बस फौज नहीं दी। यूएन का भी कह दिया तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट होगा, तो क्या रह गया फिर? हद की बात है। मैं एक ऑर्डिनरी आदमी इतनी बात कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट सब समझता है, सब जानता है, मेरा बाप है सुप्रीम कोर्ट लॉ के मामले में, मैं तो जीरो भी नहीं उसके सामने, लेकिन डरता है। हमारा मुख्य न्यायाधीश डर गया, बस इतना मैं कह सकता हूँ। और इसकी तो बात छोड़ो, पीएम की मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो चाहता क्या उसको भी नहीं पता, शायद उसको भी नहीं मालूम। एक ऐसा सरकारी पीएम, एक ऐसा देश का पीएम आज की तारीख में हमारे पास है जो ये भी नहीं जानता कि होने वाला क्या है, बस एक कल्पना की दुनिया। 1.5-2 घंटे बात करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, मैं ये कर दूंगा, मैं क्योटो बना दूंगा, मैं सब डेवलपमेंट कर दूंगा। वो कल्पना की दुनिया में सब डेवलपमेंट हो जाती है, स्वर्ग की जर्नी हो जाती है, 7 हेवन पार हो जाते हैं, सब हो जाता है, जमीन पे अटल आग खुलते चारपाई के ऊपर गिर गए।
15 लाख दिला दिए सबको उसने, 10 करोड़ नौकरियां दिला दी सबको उसने, सारे डेवलपमेंट हो गई, उसका बनारस क्यों तो बन गया, देश में सब कुछ हो गया, सारे लोग काम कर रहे हैं, रोजगार ही रोजगार है, भरमार है। अरे बाहर से आदमी आ रहे हैं, यूके से काम कर रहे हैं, जब हमारे आदमी कम पड़ गए, चाइना से आ रहे हैं आदमी, थाईलैंड से आ रहे हैं आदमी, कहाँ से आदमी मंगा रहे हैं, हम देखो यहाँ पे काम ही कम है, आ जाओ। और किसान क्या काम कर रहे हैं, देखो कितने तरक्की कर दी किसानों ने। अरे वाह क्या देश है, सारा नक्शा चेंज कर दिया मोदी ने तो। आओ शांति शांति है, राम ही राम राज्य है, कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है देश में, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। पीने को पानी नहीं तो हवा पी लेंगे, कोई बात नहीं, हवा गंदी है तो गंदी पी लेंगे, कोई बात नहीं है। भूख नहीं, भूख है रोटी नहीं है तो ऐसे खा लिया हमने, खा लिया। जय हो भारत की, जय हो भारत की सरकार की, भक्तों की जय हो, सबकी जय हो, लोगों को पिटने की जय हो, क्राइम बढ़ने की जय हो, बलात्कारों की जय हो, इनके रेपिस्ट इतने सारे एमपीएम की जय हो, इतने रेपिस्ट के एमएलए की जय हो, सबकी जय हो, बस जनता की जय ना हो। जनता के हमें वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बातें ले लो हमसे, अरे वोट तो हम खुद ही कर लेंगे, आपको उसकी चिंता मत करो, ईवीएम हमारे पास है, अपने आप हम टिक 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 कर देंगे, आप जाओ बैठो, क्यों एक दिन खराब करते हो आगे। सो आपको 5 साल में एक दिन मिलता है छुट्टी का वोट के नाम पे, और रेस्ट कर लो, जाओ घूमो फिरो, क्यों चक्कर पड़ते हो, आपका काम हम कर लेंगे, डोंट वरी, यू डेलीगेट पावर टू अस, हम अपने आप 90-95 बस अपने नाम कर रहे हैं, बाकी दूसरों के। सच्चाई यही है, यही सच्चाई है, मजाक में कह लो, डायलॉग में कह लो, जोक में कह लो, हालात यही है। पूरे आईसी ने आपको पकड़ लिया, आपको कि आपने कैसे गिरफ्तार किया इतने लोगों को, सारी दुनिया में शोर मचा हुआ है, सारी दुनिया में जहां जहां इस्लाम लागू है। ये क्या कर दिया देश ने, ये भारत ने क्या कर दिया, कैसे इन आदमियों को पकड़ के रखा है। अरे क्या जरूरत पड़ गई थी, तुम उन्हें छोड़ देते ऐसे ही, कितना डर किस बात का है। आपने एक नियम चेंज किया मान लेते, पर आप उनसे क्यों डर गए, आपने उनको दबा के रख दिया, अंदर करो उनको, आपने लाखों फौजी खड़े कर दिए वहां पे, किसने खड़े कर दिए, उनको फ्री घूमने देते ना, वो आपस में लड़ते फिर, आपने तो अब तो एक हो गए, वो जो भी आपके साथ रहना चाहते थे अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो किस लिए रहना चाहेंगे आपके साथ, आपसे पिटने के लिए, आपसे जेल में रहने के लिए, आपसे जूते खाने के लिए, वो पागल हैं क्या। और वो पाकिस्तान जो 70 साल से सोच रहा था मैं इस मैटर को कैसे उठाऊं कैसे उठाऊं कैसे उठाऊं, आज आपकी बेवकूफी की वजह से उसके हाथ मजबूत हो गए, 50 गुना हाथ मजबूत कर दिया आपने उसके, खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, जो हम सब करेंगे, जो करना है कर लो। पहले खुल्लम खुल्ला बोलने की हिम्मत नहीं होती थी उसकी, आज खुल्लम खुल्ला आपको अटैक कर रहा है बातों से, एक्शन से, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। वो शिमला एग्रीमेंट का भी ऑर्डर ले आएगा, वो इनके कर्फ्यू हटाने का भी ऑर्डर ले आएगा, वो सब ऑर्डर चाहे कैसे भी लेके आएगा। तो चाइना उसके साथ है, रशिया उसके साथ है, आपके साथ कौन है। अमेरिका की कोई पूछता नहीं, आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं अमेरिका की। क्या करके रख दिया आपने, और इंग्लैंड तो वैसे ही पिटा हुआ है, क्या करके रख दिया आपने। ये एक देश जो 70 साल से समझ रहा था अपने आप को, स्ट्रगल कर रहा था दूसरे दुनिया से, आपने उसकी लुटिया दबो दी और खुश हो रहे हैं ये कश्मीर हमारा हो गया, हम जमीन खरीदेंगे वहां पे। बस यही चाहिए आपको, इतनी छोटी आपकी डिमांड है जमीन खरीदनी है वहां से, उसके लिए तो आप बात कर सकते थे उनसे। मतलब जमीन खरीदने के लिए, वहां की लड़कियां पकड़ने के लिए, वहां की शादियां करने के लिए उनसे, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया आपने। जमीन आप हिमाचल की तो खरीद के दिखा दो, पहले अरुणाचल की खरीद के दिखा दो, मिजोरम की खरीद के दिखा दो, इसकी तो बाद में सोच लेना आप। कल मुझे इतना गुस्सा आया, एक औरत आई, अनपढ़ औरत, पंडित थी, आई यार अब तो मैं कश्मीर में जमीन खरीदूं, इतना गुस्सा आया उसका मुंह तोड़ दूं। तो इसी तुम्हारी इतनी सोच छोटी है कि जमीन खरीदेंगे इतने खुश हो रहे हैं वहां पे, मतलब इतने छोटे माइंड के, इतने छोटे दिल के लोग हो तुम। उन इंसानों की नहीं सोच रहे जो बंद है 12-13 दिन से, उनकी तुम नहीं सोच रहे। तुम लाल किले पर झंडा फहरा के उछल रहे हो कि हमारा 15 अगस्त का दिन है। अरे एक तरफ तो तुम मार रहे हो किसी को और तुम कह रहे हो हम स्वतंत्र है, वो भी तो स्वतंत्र थे, उनको तो तुमने मार दिया। और खुश हो सारे पढ़े लिखे बड़े बड़े, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और किस बात का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मर्डरर्स हैं आप ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आपको इतना भी वो नहीं है ख्याल कि हम, वो हमारे आदमी, आप आदमी नहीं समझते, अपना देश का नागरिक समझ रहे हैं। उनकी तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें उनके औरतें चाहिए, तुम्हें वो लोग नहीं चाहिए। ये ख्याल है भारत की संस्कृति के।
आपका हरियाणा का चीफ मिनिस्टर क्या बकवास करता है, आपके हुसैनी एमएलए क्या बकवास करता है, आपके छोटे बच्चे क्या बकवास करते हैं। आपने यही सिखाया इनको। ये संस्कृति है भारत की, जिसको आप हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। अरे संस्कृति राम के कृष्ण की कहाँ गई, कहाँ गई सत्यवादी हरिश्चंद्र की संस्कृति, कहाँ गई देवे, कहाँ गए त्रिदेव, कहाँ गई संस्कृति। हमको संस्कृति की आप बात कर रहे हैं। मतलब आप एक ब्लफ करते हैं हर बात पे, चाहे वो धर्म के बात में ब्लफ करते हैं। हिंदू मुसलमान तो आप क्या ड्रामा करते ही करते हैं, वो तो सब जानते हैं कि आपका तो वो डिजाइन है पब्लिक को आपस में लड़ाने का, वो तो सब जानते हैं कि आप एक ही पॉलिसी है। इन बातों को छोड़ो, देश का सत्यानाश करना छोड़ दो। तुम्हारा अंबानी वहां कुछ नहीं कर पाएगा, ना तुम कुछ कर पाओगे, देख लेना। जिनकी जमीन है वो नहीं बेचेगा तो आप क्या, एक और कानून बना देंगे, खरीद लो छीन लो उसकी जमीन। तो गुंडागर्दी होगी ना, वो दादागिरी होगी। तो अरे जब तुम्हारे हाथों एरिया नहीं रहेगा तो तुम क्या कर लोगे। आपका डिसीजन फाइनल नहीं चलना, वो इंटरनेशनल इशू हो चुका है। पाकिस्तान जो चाहता था 70 साल से नहीं कर पाया था, पिछले 2 हफ्ते में उसने कर दिया। आपकी एक गलती की वजह से वो खुल गया। पिछला कोई प्राइम मिनिस्टर शो नहीं बचा पाया था, और इसको तो चांस दे दिया आपने शो बचाने का। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कम से कम इस बात को थर्ड फ्रंट पर तो ले गया, यूएनओ में ले जा सक रहा है वो, चाहे चाइना की मदद से सही, ओआईसी में वो लेके चला गया। क्या करेंगे फिर आप तो टूट गए। इनफैक्ट आपको आपकी रस्सी से जो बांधा हुआ था आपने दोनों को, उसको उसे रोना हुआ था पाकिस्तान को, अब तक वो खत्म हो गया। और पाकिस्तान पूरी सपोर्ट करेगा, आप क्या कर लेंगे उसको, जम्मू कश्मीर को। वो हेरा फेरी करेगा, बदमाशी करेगा, वो तो करता आया है। पाकिस्तान तो हमेशा ही आपके विरुद्ध रहा है, और अब भी रह रहा है और रहेगा भी। आपको तो नहीं छोड़ेगा वो। यही लोग जो आपके साथ होना चाहते थे, यही 1 करोड़ लोग जो आपके साथ रहना चाहते थे, तो मैं ये नहीं कह रहा सारे रहना चाहते थे, आधे तो रहना ही चाहते होंगे, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो भारत की हमारी शक्ति को समझते हैं, वो जानते हैं यहाँ किस तरह की फैसिलिटी है, किस तरह के हमको मिल सकता है, भविष्य बन सकता है, किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह का फ्यूचर कर सकते हैं, किस तरह का कैरियर बना सकते हैं। वो लोग तो यहाँ रहना चाहते थे। आपने उनके दिलों में भी एक नफरत पैदा कर दी। वो भी सोचने लगे कि किस देश में हम, हमारे को बात ही नहीं करे, पूछ नहीं रहे, हमारे अपने आप ही फैसले कर लिए उन्होंने। ये आपको बात क्यों नहीं समझ आती। मतलब आप उनको कुछ नहीं समझ रहे, जो कुछ हम करेंगे हम कर सकते हैं। ये हम का जो शब्द है ना, मैं और हम, ये अच्छा नहीं होता। उनका हक था, उनका अधिकार भी था कि आप उनसे बात करते, वो आपने नहीं की, क्योंकि आपके अंदर घमंड है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश का टूटना, देश की बर्बादी होना मुमकिन है। ये है। तुम्हारे 2-2 घंटे के भाषण की कोई वैल्यू नहीं है अगर तुम सही काम नहीं कर सकते तो। लंबे लंबे भाषण देते रहो, मैं ये कर दूंगा, कुछ नहीं होता उससे। काम करने वाले ज्यादा बोलते नहीं, याद रखो। पहले आपने जो काम किया ना, वो अच्छे आदमी नहीं करते ऐसे काम, समझदार आदमी ऐसे काम नहीं करते। वो काम ऐसे करते हैं जो पता नहीं लगता। किसी को पता था कि इतने सारे एग्रीमेंट साइन कर चुके कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर के साथ, किसको पता था? उन्हीं को पता था जो संविधान को पढ़ते हैं, समझते हैं। आम पब्लिक को तो आज भी मालूम नहीं है कि 47 ऑर्डिनेंस निकल चुके हैं। आप तो एक ऑर्डिनेंस ला के शोर मचा रहे हो। कांग्रेस तो 48 ऑर्डिनेंस ला चुकी है, 1954 तक। वो भी 47 का 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 7 साल में 48 ऑर्डिनेंस साइन करा चुकी थी इसी बात के, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आपके होश में नहीं आ रही बात। 260 आर्टिकल अप्लाई करा चुकी थी, पूरी पूरी एंट्रीज यूनियन लिस्ट के अप्लाई करा चुकी थी, और पब्लिक को पता नहीं था। ये होती है कार्य क्षमता, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। पब्लिक को पता भी नहीं है, वो कर गए। मनमोहन सिंह का पब्लिक को पता भी नहीं क्या काम करता, सारे के सारे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर गया, आपको पता भी नहीं लगा। न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 साइन कर गया, करा गया, इतनी बड़ी रिस्क के लिए। आप तो कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक। आप तो करेंगे तो नागालैंड आपने अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर की हड्डी आपने तोड़ दी। आप क्या कर रहे हैं देश के लिए? यही देशभक्ति है? पब्लिक को झूठ आप बोल सकते हैं, देखो कश्मीर मिल गया आपसे, आप जमीन खरीद लीजिए, कर लीजिए। एक जमीन खरीदना ही पर्पस था बस, और कोई पर्पस नहीं होता देश का। तो जहां आपको जमीन लेनी, इसलिए आपने सब जमीन के लिए किया कि हम उनकी जमीन से हटा देंगे, जमीन खरीद लेंगे, उनको भगा देंगे वहां से, और हमारा फिर वो जमा। ये अच्छा नहीं है। आप मेरे घर को छीनना चाहते हैं, मैं चुप बैठूंगा? क्या चुप बैठूंगा बताइए? अगर आप मेरी जमीन छीनेंगे, मैं मर जाऊंगा। अच्छा भैया ले जाके मेरे को माफ कर, मुझे जिंदा रहने दे, मैं सड़क पे रह लूंगा। ऐसा होएगा? ऐसा होएगा तो आपकी सरकार तो फिर बकवास सरकार है, तो आपकी सोच ही गंदी है, बिल्कुल गंदी सोच है।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि 12 साल तक जो कब्जा है तो वो इलीगल हो गया। अरे व्हाट सुप्रीम कोर्ट यू आर, क्या है ये बदतमीजी? कोई आदमी मेरी जमीन खींच के मुझे छुपा दे, कहीं 12 साल दबा दे, कहीं मुझे बात ना करने दे, मुझे कोर्ट में जा दे और जमीन पे कब्जा करके बैठ जाए, मेरे मकान पे कब्जा करके बैठ जाए, उसकी हो गई वो। अरे ये पागलों वाले फैसले कैसे कर रहे हैं आप लोग? कागज मेरे पास, ऑनरशिप मेरे पास, आप कह रहे हैं 12 साल कब्जा कर ले तो उसकी हो गई। कमाल की बात है भाई। जिंदगी भर मैंने कमाई की, मैंने पैसा कमाया, खून पसीना बहा, मैंने मकान बनाया और किसी गुंडे ने आके मेरे को उठा के कहीं छुपा दिया, 12 साल बाहर नहीं आने दिया और उस कब्जा करके बैठ गया, कह गया देखो मकान मेरा हो गया। ये क्या है? ये संविधान को समझ रहे हैं आप? ठीक है जज साहब हैं, मानते हैं आपके, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, आप लॉर्डशिप हैं आप, लेकिन फैसले अगर आप ऐसे देंगे तो हम आपको जज मानेंगे? ये फैसला है क्या? बताइए आप क्यों फालतू फैसले कर रहे हैं? ये फैसले में क्या लॉजिक है बताइए मुझे आप? मकान उसका, पैसा उसका, बनाया उसने, कागज वो उसको किसी को रखे ना रखे उसकी मर्जी। कोई जबरदस्ती कब्जा उससे कर लेता है, उसके मकान को किडनैप कर लेता है, उस आदमी को किडनैप कर लेता है, पता भी नहीं लेता, वही बेसमेंट में छुपा देता है, 12 साल जिंदा रखता है, मारता भी नहीं है, और उस मकान को कागज 12 साल तक ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद वो 13वां साल आ जाता है, फिर वो आदमी बाहर आएगा, क्या कर लेगा वो आदमी? 12 साल कब्जा हो चुका है। पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हो क्या गया है, क्या है ये सब? आप समझते हैं इस बात को? नहीं समझते हैं? ये आप पर भी लागू है। अगर आपका मकान किसी को, अपने रिश्तेदार को भी दे दिया ना कि चलो आप रह लो थोड़े दिन, वो नहीं खाली कर रहा, 12 साल पास हो गए, आपका मकान गया, मेहनत आपने की, कमाई आपने लगाई, जिंदगी सारा खर्चा आपने, बच्चों के सब कुछ किया, पेट काटा आपने और मकान बनाया, वो लेके वो चला गया। ये है सुप्रीम कोर्ट हमारा आज की तारीख का। सोच होता है, पढ़ लिख के आए हैं, नकल मार के आए हैं, क्या करके आए मुझे नहीं समझ आ रहा। ये समझते नहीं है कि नियम कानून क्या होता है। ये भी ह्यूमन राइट चला गया ना हमारा। मतलब 12 साल जो मेरे मकान पे बैठ गया, मुझे पता नहीं, मैं बाहर काम करूँ, किसी को पता नहीं है, तो मेरा ह्यूमन राइट गया, कब्जा उसका हो गया। अरे किसी वजह से मैं बाहर काम कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, तो उसका कब्जा हो गया, वो लीगल हो गया। मैंने गुड फेथ में एग्रीमेंट भी मान लो उससे नहीं किया, कुछ नहीं किया, चल रहे थे, कोई बात, दोस्त है मेरा या मेरा रिश्तेदार है, शांति से रहे 12 दिन, वो 12 साल बाद मालिक बन गया। ये फैसला है क्या? कमाल की बात है, हद हो गई है। ये पहली बार हो रहा है सर, ये तो पहली बार हो रहा है। It's very strange that we people are in a stream of doldrum situation, a stream of very negative situation that country is passing through, and it's not in the interest of any one of us. Now there are very problems regarding Jammu and Kashmir state, though of course Parliament has passed something, but Parliament passing doesn't apply onto instrument of accession, which I just explained to you what it is. Instrument accession is very first document that applies to Jammu and Kashmir and our country, because this document is international document signed by Lord Mountbatten and our Jammu and Kashmir king. So this is not a national document. And also 370 document contains instrument accession terms 2 places. If you just go through that, you will understand it, because you are not going through that. Even I think Modi has not gone through that, Mr. has not gone through that. And that's the reason that they just accepted without any considerations. That article is also not absolutely internal, that is 50% internal and 50% external. Of course, CO 48, which was done by Congress time up to 94, there are 48 ordinances signed by President, and that are meant to apply provisions of Constitution of India to Jammu and Kashmir. So you can say 260 articles were applied, and the union list was applied. It was accepted by them. Only 1/3 portion was not applied due to certain reasons, which I don't know, and that could be by time, passage of time, they could do. They were doing diplomatically, gradually oiling this state people and just taking into confidence that state and applying confidence building measures to that state people, and they were doing successfully. But now whatever they did in those times has completely been scrapped. Instrument accession is in valid state or invalid state is not clear from government of this country. As far as I understand, from technical implication, from implication of laws, if 370 has gone, if all CO 40 had gone, this means instrument of accession is dead, completely dead. And now there are 2 options: if it is dead or it's alive. If it is alive, this means you cannot decide anything about Jammu and Kashmir on your own. Unilaterally, you cannot decide. If this means whatever you pass in Parliament, that's all void. Even after President signs, all void. Because instrument of accession doesn't allow that. You cannot even change a single word, single letter from the instrument accession. This is the spirit of that instrument accession. This means you caused a mistake, real mistake. Then the thing otherwise.
If it is dead, oh sorry, it is alive, say, if it is alive. If it is alive, you have done mistake. If it is dead, if it is dead, you means for your point of view, Jammu and Kashmir is dead for you. You cannot claim on that. Because Jammu and Kashmir article, instrument accession has gone, means it brought with something a cup of tea, that cup of tea has gone. It brought with it something else, it has gone. This means it brought with it land of people of Jammu and Kashmir, they have gone back. This is status. So which one is best for you? You choose yourself. Practically, legally, theoretically, and by application law, Jammu and Kashmir has gone from power of our country in spite of fact they have enacted laws, enacted acts in parliament which got no meaning at all because that enactment is void until until Jammu and Kashmir Assembly approves that, and Governor of Jammu and Kashmir is not Assembly. Governor of Jammu and Kashmir is representative of Government of India, and that has got no meaning at all because Governor is not government. Government is council. This is law. Just like central government, President is not government. Council of Ministers is government. President is head, and head alone cannot decide. Similarly, governor is head, not government. Government is council of minister of state. That is difference. Constitution assembly does not exist. Assembly does not exist, and you have passed something, assuming Parliament of India is Assembly of Jammu and Kashmir, which is void. I don't know what lawyers think. I don't know what advocates think. I don't care for that because this is a common understanding as a common citizen of this country. A layman, you can say, I am layman of legal understanding, and that layman is saying this. You are also layman. If you are not lawyer, you can yourself analyze. I leave it to you. If I am wrong or right. Then comes UNO, which is already there is a resolution, and that has been repeated many times. Resolution 48. In year 48 is was signed. It is agreed that you have to conduct referendum on Kashmiri people for them to stay with you or with Pakistan or have stand independent state. That is still alive. That is not dead. And maybe you have to conduct that now because now water has gone here above eyes and you can have no resistance. You cannot refute that. Till now, Simla agreement protected that. But when two parties are not fighting, two parties are fighting, and according to that, they cannot agree on something by unilateral discussions, yes, bilateral discussions, they cannot agree. Simla agreement says third party can come in because Pakistan has given return and you have arrested those people. Arresting those people means you are not able to talk to Pakistan and Pakistan is able to talk to you. When two parties fail, Simla agreement automatically stands void. So virtually Simla agreement doesn't work. Of course they will ask us, talk under Simla agreement. If you talk, something can move further. If you say no and Pakistan says no, automatically UN resolution comes into picture. Pakistan loses its rights and we lose our rights. Both rights are absolute there. UN, our father UN, that resolution about JNK, that comes to you to ask both nations and ask JNK people, decide about your future. What shall you do? Means something in your hand you had for 70 years, you have crushed that ball yourself, unfortunately. This is analysis. Simla agreement you have attacked, and you have attacked instrument accession, and you have attacked UN resolution, and ultimately all things will bounce on you, and you will be caught by some player, and Pakistan and China and Russia to some extent are players while US is already in bluffing state, not powerful now that it was before. So what shall you do? You can think yourself, decide yourself. No use of explaining again and again. There's no meaning at all. If you people of this country having different approaches towards public of this country, on one side you are liberating Nagaland, or one side you are beating public of GNK, these two cannot coalign together. No uniformity in this national applications of constitutional powers. So what can be the result?
I don't know why Modi signed that agreement with Nagaland and why he did on this JNK. This issue could be prolonged further for many years, and gradually you can talk to those people. If you had nobody to talk to them, you can talk directly to people, or you can could conduct internal referendum what those people wanted, whether they wanted 370 or they not 370. You cannot suppress people's conscience. Yes, you have done it, but those people are now exploding. Naturally, will explode. You send Lokbal there or whoever, doesn't matter anything. You arrested Farooq Abdullah, you arrested Omar, you arrested those leaders. What purpose it will serve? Have you ever thought of? You did not think of that because you have no capacity to think. You can only hammer. That's it. Means some person who hammers without application of mind, without thinking, without applying any analysis, that act you have done, which is neither in interest of our country nor interest of those JNK people. Though people, poor people, good people, or whatever they are, whatever economy they have, means they cannot, they don't want to, they wanted to stay in peace, but you disturb their peace and you want to buy land only and they will not sell land. What shall you do? You say we'll make another law. Laws you think can solve problems. Ultimately, if you do like that, they will rebel. They will start resorting to physical action. They will become more terrorism. There will be more terrorism. If there were 10 terrorists till now, there will be 100 terrorists now. Now, what solution then? How long can you do that? You are on now. You are doing same thing as Israel is doing. Israel does same thing. Means Israel is not a human state. They don't have human conduct. They are a terrorist state. They start beating kids. See, if just somebody is wrong, they shoot somebody. Why reaching this wall? Because they have no humanity. They are cruel people, and our government is also cruel now. Cruelty doesn't work. They just try to bribe Palestinians. The son-in-law of U.S. President Kushner. I will give you 50 billions to development for development. Palestinians did not agree. Nobody agreed. You want to buy us? Same thing you will do with people. You want to develop your land, your state. You want to buy us? People can't be bought. Can't be. Only RSS will be bought by British, nothing else. They bought RSS at that time of freedom. Don't support us. They paid money probably to them, or if not money, something else they promised them. World is not like that. If those people who struggle for 70 decades, 7 decades, they will suffer 10 more, 2 or 3 more decades. What shall you do? You have input a fire in that public to have more conflict. They will fight and fight more against us now because in their mind they don't care for our constitution, they don't care for our nation, they don't consider them integrated with nation. If that kind of approach they have got in, what shall you do? Till now they were Indians, they were Bharatvasis. They used to say we belong to Bharat. 90% of them used to say that, or 80% of them used to say that, except those who don't believe in terrorists or some mullahs, etc. But majority of people were with us. Now they shall change their minds certainly. Abdullah will change his mind, and Omar will change his mind, and Mufti Saeed will. Everybody will now not accept you, because you have cheated them, and this is not positive. This is negative. You have not done favor to this country. You have not acted in a patriotic way. You are acting in a cheating way, deceiving way, just for sake of pleasing public of this country to fetch votes in that standard. Because you will see what I have promised you have done. You will simply say that I will make this state very well like heaven, just like you have made Banaras heaven. You say like that, and public is swayed by your talks. You know it very well. Our Prime Minister knows very well. Whatever he speaks, public try to accept that. That is the problem. If you accept everything what PM says until you understand that, Indira Gandhi also said Garibi Hatao, but she could never remove. Of course, she did something, but not to an extent she promised in 1971. This applies to all. You are saying Pandits were thrown out. You don't know how they were thrown out. It was you BJP, you VP Singh government who supported that government. BJP supported that government. And these people are now alleging upon whom? Congress, the Pandits were left. Who was governor that time? Jagmohan. Who was he? RSS guy. Do you know that? You don't know that. VP Singh
support by BJP. Pandits are out from state. Why Bauds were not out? Why Jains were not out? Why others were not out? Why only you were out? Is it not a question? What I'm saying is we have to analyze, we have to consider each and every aspect of some problem if we want to solve that problem. And if we don't want to solve any problem, there is no answer to that. And unfortunately, our youth, our particularly those who are educated one, who have elevated themselves in knowledge, they have knowledge of their subjects, they have knowledge of their field, but they don't have knowledge about this nation. And that is only a reason every time when I start talking to you, I start talking about preambles, I start talking about fundamental duties, just so that you can think of that. I know that you will not, you may curse me, you can abuse me, you can do whatever you want to do. You do no problem at all, because I am having all accustomed to that. Every day 50, 60 abuses are reaching me, no problem, do it. It's for you. Your parent taught to you this culture. My parent did not didn't inculcate me this culture. You can write whatever you want, you can speak whatever you want, you can abuse me, you can say something, but I will speak in favor of Bharat. I trust in Bharat. Bharat is my parent, Bharat is my life, Bharat is my birth, Bharat is my death, Bharat is everything is mine. I trust in Bharat, I trust in Bharat देश, जो राम का है, जो कृष्ण का है, वो देश जिसके बारे में भारत कहा गया, कृष्ण ने भी कहा, राम ने भी कहा, सत्य अधिरिशन ने भी कहा। मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मैं आप लोगों की ऊट पटांग बातों में विश्वास नहीं करता, मैं हिंदू होने में विश्वास नहीं करता, मैं वो होने में विश्वास करता हूँ जो राम और कृष्ण थे, धर्म वाले, हिंदू वाले नहीं। वो धर्म वाले थे, वो धर्म की बात करते थे, सच्चाई की बात करते थे, अच्छाई की बात करते थे। हम लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं, बस फर्क इतना है। जो हिंदू की बात करता है वो हिंदू को, वो उस देश का नहीं है, क्योंकि ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये देश वैदिक देश है, ये भारत जो है देवों का देश है। हिंदू नहीं थे, देव ना है। हिंदू उनका शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द नहीं है हिंदू, हिंदू अरब का शब्द है। तो आप अरब कैसे हो गए? मेरे को तो समझ नहीं आती बात। हिंदू नाम का कोई धर्म दुनिया में नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म है वहां, धर्म को जब भी हानि होगी, यदा यदा ही हिंदू धर्मस्य नहीं है। धर्म को स्थापित करने ले आऊंगा, हिंदू धर्म नहीं है वहां। भारत लिखा है वहां, हिंदुस्तान नहीं लिखा है। यदा यदा ही धर्मस्य गलाने भवति भारत, वहां हिंदुस्तान नहीं लिखा है। जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, वहां भी हिंदुस्तान नहीं लिखा है। आपको पता नहीं हिंदुस्तान कहाँ से आ गया। जिसको बोलो हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हिंदू रस्ते नहीं हो, हिंदू जबरदस्ती बना दिया, जबरदस्ती हिंदू बना रखा है। हिंदू विश्व में है नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं, किसी गीता में नहीं, किसी रामायण में नहीं, कहीं नहीं, फिर भी हिंदू हिंदू हिंदू। एक बेवकूफ़ी बना, आपको कोई दे गया, मुगल आदमी दे गया, आप मान के बैठ गए। कोई अंग्रेज की औलाद आपको इंडिया दे गया, आप मान के बैठ गए। अपनी संस्कृति अपने आप भूल गए और फिर कहते हैं हमारी संस्कृति वाले हैं हम। क्या संस्कृति कहती है? संस्कृति तो ये कहती है भारत वो नाम है जो पूरी दुनिया में अप्लाई होता था एक समय में। तभी तो कहते हैं जगह जगह हमारे मंदिर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ ये लागू होता था भारत, पूरा विश्व भारत था, खाली ये जगह भारत नहीं थी। तो आप उस नाम से क्यों चिढ़ते हैं? जिस मिनिस्टर को देखो, जिस हिंदुस्तान, राहुल गांधी को देखो तो हिंदुस्तान, किसी बीजेपी वाले को देखो तो हिंदुस्तान। अरे गधों, क्यों गधे बनते हो? इतना भी नहीं समझ सकते 70 साल में कि क्या नाम है हमारा? बातें करते हो बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी करते हो, अपनी बेइज्जती खुद भी करते हो। इतना नहीं सीख सकते आज तक कि आपका नाम क्या है? वो भी नहीं सीख सकते आप क्या चलाएंगे देश को? खाली बातें करना, बस यही काम है। खैर, अब मैं बंद करता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा हो, सद्बुद्धि आ जाए हमारी सरकार को और सद्बुद्धि आ जाए हमारे कोर्ट को। नहीं तो भाई जूते पड़ेंगे दुनिया से। ओवाईसी तो जूते मार चुकी है ऑलरेडी। आप पढ़ लीजिए न्यूज़, ओवाईसी क्या लिखा है, उन्होंने क्या फैसला किया है। वो कहते हैं जो कि आपने सब गलत किया है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, क्योंकि वो इस्लामिक संगठन है तो इस्लाम की बात करेगा, मुसलमानों की बात करेगा, पक्की अपनी तरफ से करेगा, वो कर रहा है। पाकिस्तान पूरा सफल रहा है वहाँ। और यूएनएस से आज क्लोज जो करेगी वो क्या करेगी? वो यही करेगी, सिमिलर एग्रीमेंट को फॉलो कर जाता मैं समझता हूँ। पहली वार्निंग यही होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप डिसीजन आते हैं। आप सिमिलर एग्रीमेंट फॉलो, अभी तक तो वो खाली बोल रहे थे, अब राइटिंग में आएगा कि सिमिलर एग्रीमेंट को फॉलो करो। आप फॉलो करेंगे नहीं तो सिमिलर एग्रीमेंट चला जाएगा। तो ये हो गया ना, वार्निंग आएगी कि पाकिस्तान बैठ के भारत के साथ, भारत बैठ के पाकिस्तान से सिमिलर एग्रीमेंट के साथ बातचीत करो,
आप बातचीत करेंगे नहीं तो शिमला एग्रीमेंट भी चला जाएगा। फिर वो कहेंगे ठीक है ह्यूमन रेजोल्यूशन सामने लाओ, ह्यूमन रेजोल्यूशन आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, आप वहां फंस जाएंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता वहां पे। वो 70-72 साल पुराना कागज आज फंसा देगा आपको, जिससे कांग्रेस ने बचा के रखा था 70 साल, उस कुंभकर्ण को आपने उठा दिया। उठो उठो, राम से लड़ाई करनी है, आपने उठा दिया उसको, हमने पाकिस्तान को राम बना दिया। अफसोस इस बात का है, वो पाकिस्तान जिसके हाथ कटे हुए थे, जिसको पीट रखा था अच्छी तरह से कांग्रेस ने, आपने इसको हीरो बना दिया आज की तारीख में। जहाँ यूएनएस जा, ओआईसी जा, सब जगह जा, उसकी एप्लीकेशन चाइना ने सपोर्ट कर दी और उस पर क्लोज और बात हो रही है। बेशक पाकिस्तान उस मीटिंग में नहीं होगा, सवाल ये नहीं उठता है या भारत होगा कि नहीं होगा, सवाल ये उठता है कोई तो फैसला आएगा कि यूएन ये कह देगी यूएनएस से जाओ कोई बात नहीं सो जाओ, नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं कह सकती। पोलैंड वाला पहले ही कह चुका, चीफ है उसका आजकल यूएनओ का, वो पहले ही कह चुका है शिमला एग्रीमेंट, अब वो ऑफिशियली कहेगा, उसे आप मानेंगे नहीं क्योंकि आपकी नाक बहुत ऊंची है। फिर यूएनओ आएगा, सामने रेजोल्यूशन सामने आएगा, फिर आप गए हाथ से, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। अभी भी सॉल्यूशन है आपके पास, अभी भी इलाज है, इंजेक्शन है आपके पास, दवाई है आपके पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। आज भी आप चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं, गलती को सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं सुधारेंगे तो देश के हाथ से ये चला जाएगा और आप होते रहना। प्लेबल साइड में आपको 1% भी वोट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जम्मू का मिलेगा या पंडितों का मिलेगा, बाकी कहीं वोट नहीं मिलेगा आपको। आपके 90% 85% जम्मू कश्मीर ले जाएगा, फिर आप होते रहना। खैर आपको समझ नहीं आ सकता क्योंकि आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, आरएसएस के बारे में सोच रहे हैं, आप बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं, आप मोदी के बारे में सोच रहे हैं, इसके अलावा आप नहीं सोच रहे। जय भारत, नमस्कार।